debate with each other to understand a specific concept. So that is the main theme and how we need to do these sessions. So ऐसे नहीं है कि एक concept है and उसको पढ़ लिया है and we have just covered this topic and we went to another topic. It's not like that. So ML में survive करने के लिए we need to discuss and debate with each other about their hypothesis and how they gonna support them. So so long term goal ये होगा कि we will cover diffusion models. So उसके लिए जो भी prerequisites है वो एक चीज हम session wise हम discuss करके चलेंगे. So for understanding diffusion models, probability is the foundation which we need to touch, and those notations and everything. So whenever you study any probabilistic models or VAE or diffusion models, there will be a lot of notations in papers that will be overwhelming to see. So that's why we need to cover every fundamental things. So like हम तो AI यूज कर सकते हैं. AI यूज करने के बाद हम we can do very very big things, predictions or generations and lot of things. But still, how basic probability is important and how it is related to modern ML or any Gen AI or agentic AI. So that's a very basic question people has, like क्यों पढ़ना है statistics या फिर probability. So why? So the first thing we want to know is why we should study that. So why and how it is related. So another thing is how it is related. So yeah, 1 second. तो मैं ये कंपैरिजन कर रहा था कि ML में like statistics and probability का क्या रोल है and why we need to study them. So कौन सी area, like what subspace of machine learning needs statistics and what subspace of ML needs probability, and how they are different, and what is the actual difference between statistics and probability. Though when we study probability, we will be referring to a lot of terms which are related in statistics. So what exactly is the difference between statistics and probability? So statistics is something which is like हम ये कर सकते हैं कि data and यहाँ पे एक arrow and this is model. Sorry, connection. This is model, and again we'll be having outcomes, predictions, which we can say. So जो ये वाला पार्ट है, like data and model, इसके बीच में जो भी आएगा, it is mostly oriented with statistics. And model and predictions के बीच में जो आएगा, it is mostly about optimizing the model, the best fit model. So this part is mostly involved with probability and stuff. So statistics जो है वो ये वाला part में apply होता है, and probability जो है and ये वाला part में apply होता है. Like when you take a lot of data and you want to represent it in a best way, and you will see the distribution and the mean mode variance and all this stuff. So it will be like mostly related to data, like giving a more like representation of that data. So that specific thing is statistics. Like for that statistics style का कुछ functions होते हैं, like linear regression or logistic regression और maximum likelihood estimation MLE, और किसी hypothesis हमारे पास है, like data को देख के हम एक hypothesis कर सकते हैं, and वो वाला सब चीज आते हैं statistics के अंदर. And probability के related is about optimizations. Like optimization is calculus, I understand, but certain process and certain functions like Poisson processes and certain distributions like
binomial distributions or Bernoulli's distributions, all this come in probability. And probability is about understanding outcomes, like understanding what are the predictions, how correct are they, and if they are not correct, how bad it is, how unlikely it is for a model to be predicting the correct answer, and all this stuff. So मॉडर्न जेन आई में अगर देखेंगे तो फिर लाइक हैलोजिनेशंस होता है, तो हैलोजिनेशंस क्यों होते हैं उसके लिए probability काम आता है, and how the answer is likely to be correct, and these all things should be understood only by probability. So this first wala part is statistics and second wala part is about probability. So mostly here more like terms which we explore is sample space, that is denoted by omega, and event space, that is denoted by capital A. And we will be understanding probability functions. So probability function, right? Probability. And it is represented by P of something. Right. So omega क्या होता है सबको पता ही होगा. Like if you roll a dice which has 6 faces. So what are the outcomes of that that specific dice rolling? That will be 6 heads, like 6 numbers, right? 1 to 6. So it can be 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. So omega is nothing but a set of all these things, right? And event space क्या होता है? Event space is when you do certain event and it contains all possible values of that specific event, right? So uske liye it is like we can say it is the power set of omega. Like if you uh, power set cases, like everyone knows, right, what is power set? It is a set of all subsets of a set. So अगर एक सेट का सबसेट्स निकालेंगे एंड उसका एक सेट बनाएंगे, देन इट इज पावर सेट. So for every set, if you want to know how many possible subsets are possible, then we can use this formula of 2 power x. So 2 power x. 2 power x, yeah. So when you substitute that, so 2 power 2 is 4. So when you toss 2 coins, then you will be having 4 possible outcomes. Uh, that is HH and HT and TH and TT. So all these 4 comes in omega, like the sample space. Possible outcomes. And event space क्या है? It is that subset, power set of of omega. Right. So is this clear up to now? I'm sorry, I don't have that pen wala thing. If it was pen, I would be describing it very well. Here on screen, I'm not able to write. And probability. Probability is, it's a decimal value or a numeric thing which is between 0 and 1, right? So अगर हम एक डाइस को रोल करेंगे and if you want a certain number, let's say 2, then it will be 1 by 6 times, right? The probability, because so 2 is a single outcome out of 6 outcomes. So 1 by 6 is the probability of that specific dice. And if you throw 2 dice and you want to get the possible outcomes will be 6 into 6, of course, right? 6 into 6, 6 times 6, that is equal to 36.
and this is countable here. So we have discrete values like six times six, like two dice hai, and एक के पास six heads है, so possible will be 6 into 6, that is 36. But if it is a continuous thing, so we'll be having infinitely many things. So if I describe two events, one event is about you know rolling a dice, so you will have 36 outcomes. So if I say choosing a point on the on the edge of a circle which has infinity points, will be infinity, right? The possible outcomes will be infinity because the points are infinity. So selecting a point on the circumference of a circle will be infinity. So that is uncountable space इसमें जो है. So event space is something which we have already said, sets of outcomes in the omega. And yeah, the next topic which we want to understand is what are the characteristics. So what are the characteristics of the sample space, that is omega, and event space also. What are the characteristics? So एक एक हो जाएगा क्या, like every possible outcome मतलब and we need to take care of nothing and everything. इसका मतलब क्या हुआ? We should be having null, that is 5, and we should be having universal set, right? That is omega itself. Yeah. Hmm? How can I increase that? Hmm. So characteristics of omega, right? First one is about nothing and everything, which is null phi, like a set which contains nothing, and omega, that is set contains every possible outcome, right? And let's say like we have something like some subset of event space, that is alpha. Alpha belongs to A, that is event space, right? Then क्या होना चाहिए? Alpha is a a specific event or a function which we can say. Okay, so उसका complement. So alpha complement I'll be representing as alpha c should also belongs to A. So अगर alpha, which is a subset of A, which belongs to A, is there, then alpha c, that is alpha का complement जो है वो भी होना चाहिए किसमें? That is event space में. So event space is a space where you take a possible event like six outcomes होंगे ना एक dice में. So if you want two should be coming, then two will be the alpha, and like a set containing two will be the alpha, and alpha का complement क्या होगा? Remaining numbers other than two will be the set of remaining numbers other than two will be alpha complement. So both should be there, and the union should give you the omega. Okay, so that is the second point explanation. And the third thing is, if there are two possible events, let's say alpha and beta,
which both belongs to A. Then alpha union beta should also be in A. So alpha is an event, like let's say getting 2 and 3 out of 1, 2, 3, 4, 5, 6, and beta is an event which is getting 6 out of 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then ये जो ये है like event space है, तो event space में like ये जो event space है, then it should be containing both and उसका complements भी, like for example it is an example. So alpha हो गया getting 2, 3. So it should contain, so, and let's say beta हो गया getting 5 and 6. So total क्या क्या होंगे? So let's say we'll be having first is 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is one thing, and another thing is having nothing, and another thing is the event which we are speaking, like alpha, that is 2, 3. And another thing which we need to have is उसका complement, that is 1, 2, 3 है, and 4, 5, 6. ये हो गया. And beta क्या होगा? Beta होगा, let's say having 5 and 6, right? As we took this as an example, 5 and 6. And इसका जो complement है, that is 1, 2, 3, 4. That's it. 5 and 6 already है. So उसका complement में नहीं होगा. ये message is not able to see. Okay. So ये total होंगे. And इसके साथ साथ we'll be having, so as A is a superset of subsets of possible outcomes, we should be having subsets, the combination of these sets as well. So I'll explain shortly what does that mean. Like ये सब जो है इसका combinations भी होना चाहिए event space में. So another point which I want to share is यहाँ पे characteristics में. So that is, yeah, of course it is mathematically. Once I write, you will understand. Alpha and beta. यहाँ पे and का मतलब है intersection. That should be equal to alpha complement and beta का complement overall का complement. So alpha and beta should be equals to alpha का complement and beta का complement. इस जिसका intersection लेने के बाद complement जो है उसका इससे equal होना चाहिए. So if you write it as a note on a paper, you will understand it. It is very simple thing. So it's just a mathematics principle. So yeah, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके बात करेंगे कि इवेंट स्पेस, यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, ऐसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे. यहाँ अब अल्फा को ये बोलेंगे कि अल्फा का मतलब ये है वी वांट 2, 3. ओके, दिस इज लाइक वी आर स्पीकिंग एक इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं. सो अल्फा इज एन इवेंट विच गिव्स यू 2, 3, एंड बीटा इज एन इवेंट विच गिव्स यू 1. सो अभी हम डिफाइन करेंगे कि अल्फा, आई मीन ये जो ए है, दैट इज ए इवेंट स्पेस which is represented by A क्या होगा, right? So we will open a set. So उसमें क्या क्या होंगे, पहले तो सुपर सेट आना चाहिए. So
You should be doing it with me, just not listening. You should be, calculating the answer in your mind. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो जाएगा. And इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सो कॉम्प्लीमेंट पेयर वाइज लिखेंगे. सो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? दैट इज 5, राइट. एंड यहाँ पे अल्फा डिफाइन करेंगे. हम अल्फा का लिया था, तो अल्फा क्या होगा? 2 कमा, राइट. इसका सैम्पल स्पेस, आई मीन पॉसिबल आउटकम. सो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1 कमा 2 कमा, सॉरी 2 नहीं आएगा, 2, 3, 4, 5, 6. एंड ये होने के बाद यू विल टेक बीटा, राइट. बीटा में क्या होगा? 1 होगा. एंड इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 का कॉम्प्लीमेंट दैट विल बी 2 कमा 3 कमा 4 कमा 5 कमा 6. ओके. एंड ये होने के बाद, as I mentioned already, like A is the superset of possible outcomes for a given event. So अभी यहाँ तक तो हो गया है. Then we will see about, then we will be seeing about so we'll be considering alpha union beta. क्या होगा ये? And 1 and 2 comma 3, इसका यूनियन क्या होगा? So that will be becoming, 1 comma 2 comma 3, right. And तो इसको भी यहाँ पे लिखना है 1 comma 2 comma 3 comma, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है. So it will be 4 comma 5 comma 6. So you must notice that these things are not repeating here. So ये वाला जो set है, it is not a repetition set. So it should not be like it. Every set in this superset should be distinct. And अल्फा बीटा का यूनियन ले लिया, तो फिर हम लेंगे अल्फा, बीटा एंड अल्फा का कॉम्प्लीमेंट. सो okay, we'll be taking alpha C union beta. So what it will be? What is alpha complement? 4, 5, 6, right? Okay. So I'll write it down here. 2 comma 3 हो गया alpha, and इसका union इससे, sorry, so here 2 comma 3 के अलावा alpha C, alpha complement. So it will be 1 comma 4 comma 5 comma 6 union with beta, that is 1. So it is 1, right? 1 and this. So it will be A complement itself, right? इस दोनों को क्या ही आएगा? A complement आएगा. So A complement in the sense alpha complement. So it is already taken. So 1, 4, 5, 6 is already there. So we need not to worry about it. And तो इसका उल्टा, like beta beta complement union alpha. So क्या होगा? तो बीटा कॉम्प्लीमेंट में क्या है? सो 1 के अलावा सब चीज होंगे 2, 3, 4, 5, 6. एंड अल्फा क्या है? 2, 3. सो ये भी it will come as beta complement itself. So ये भी है, ठीक है. So what I'm trying to say is event space is nothing but event space उसको define, like ये याद रखना चाहिए. event space
जैसे मैं लिखा है is equals to set of sets of outcomes in omega. So this is event space. So up to now for whatever we have discussed. So we have discussed what is omega, sample space क्या होता है, and what is event space, and what is the probability. Like we just understood what is this notation. Probability को ऐसे represent करते हैं. So that's what we have understood till now. So now we'll understand a probability in depth. कि probability चीज क्या है, like how we only define it in between 0 and 1. So for probability measure P of something. So it can be defined as a, a particular function mapping from A is event space to certain range, right? 0, 1. 0 से 1 तक एक रेंज के अंदर एक इवेंट स्पेस का वैल्यू दे रहा है. So it is a function from A, that is event space, to 0, 1 possible values. So probability कभी भी points के अंदर ही होगा. Either max it can be 0, it can be 1. Minimum it can be 0. So this is what I want to tell. So इसका बीच के अंदर हो सकते हैं possible values. Example values क्या हो सकते हैं? 0.1, 0.9, 0.5. All these stuffs are examples. So this is very, very basic. I know most of you gets bored about understanding this stuff. But trust me, like these basic things will be weaved in a certain way that things will be getting so complex. So to understand those concepts, you need to, unweave all these concepts. And when you take that specific thread of that specific function, you will get these basic things on it. Right. So yeah, let's come to alpha again here. So alpha is a specific event, right? So alpha belongs to a specific event space. So probability of that specific alpha कितना होगा? That will be between 0 less than or equals to P of alpha less than or equals to 1. So up to now it is very clear. And probability of phi क्या होगा? Phi is null. It will be 0, right? P of omega क्या होगा? That will be 1, right? Yeah. Another thing which we can define here is अगर A, comma, like alpha, comma beta are disjoint sets. Now what are disjoint sets? Like अल्फा का जो पॉसिबल आउटकम्स है वो मैच नहीं करेंगे बीटा का प्रॉब्लम, लाइक बीटा का पॉसिबल आउटकम्स है. इसका मतलब है दोनों का दोनों जो आउटकम्स है वो टू स्पेसिफिक सर्किल्स है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट. So if you want to find the intersection of both of these things, so alpha and that is intersection of beta, that will be phi. So both are disjoint sets. So at that specific part, P of
A union beta will be giving us P of, sorry, alpha, and beta will be alpha and P of beta. So it should be clear up to now, right? Mhm. So we have certain terms called mm, cumulative distribution function. That is nothing but it is like it is not exactly probability of something, but it is a function. It is not a discrete value. I repeat again. ये एक discrete value नहीं है which comes between 0, 1. So it is a function of that probability. You know, एक data को represent करते वक्त जब हम probability निकालेंगे एक function निकलेगा. So that is represented by P of X. So if you take any research paper, you find P of X, or sometimes it is represented as F of X. That is cumulative distribution function. So, so these all things, and I'm not able to draw that graph, but maybe. So यहाँ पे so let's take a number line here. So this is a number line. So it has 1 and यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4 and 5. So यहाँ पे 4 and यहाँ पे 5. So it will go to positive infinity and this is negative infinity. So if you take any range, so यहाँ पे 0 भी होगा and यहाँ पे negative values होंगे. And if you take any intervals here, specific intervals, all these intervals, and these intervals will give you, you know, overall x ka values, right? So this is something we call as a Borel sigma, you know, algebra. I think in next section we will understand what is sigma algebra and what is Borel sigma algebra representations. वो graphically समझ में आएगा. Today I don't have the cable to connect with my tablet, writing tablet. Tomorrow maybe we'll be discussing that. So yeah, graphically वो अच्छे से समझ में आएगा. Tomorrow we'll look that. Next we'll continue with most interesting thing, that is random variable, very basic concept. So अभी तक जो भी अगर doubts है मुझे पूछ लेना, क्योंकि we'll be getting into a bit harder stuff. कोई है जिसके पास कुछ questions हो? Hello. Bhaiya, can I continue? Okay. So we'll be going to another topic. Like, it is not another topic, but understanding certain functions inside the overall space, that is probability space, that is random variable. So a random variable, we can say it as a function. So generally we represent this with capital X in probability. So it's a function. So it is nothing but a function which is mapping from
a two we draw two vowel shapes when we study functions in 11th or 12th. One is called the domain, and it will be mapping to range, right? So यहाँ पे domain हो जाएगा omega. It will be mapping to another space, that is target space. It is represented by capital T. So यहाँ पे T क्या है and omega क्या है? So that's the important thing. So omega ये होगा, like for example you take two dice. Then possible outcomes क्या क्या होंगे? So omega क्या होगा? It will be starting from 1, 1, right? 1, 1 से start होगा and it will be going until 6, 6, right? So these will be the possible outcomes, and total number of outcomes will be equals to 36. So if you take a 6 into 6 table, you can map 1, 1, 1, 2, and all this stuff. Like rows will be 1 to 6 and columns will be 1 to 6. It will be a 6 to 6 table containing 36 possible outcomes. That is omega. So those are the possible outcomes. And what is T? T is tied to specific alpha. So एक specific event लेंगे and उस event को डिफाइन करके क्या पॉसिबल आउटकम्स होगा, वो चीज होगा A. So for the same example, T can be यहाँ पे हम पॉसिबल इवेंट अल्फा ऐसे डिफाइन करेंगे, सम ऑफ नंबर्स. सो वो कहाँ से कहाँ तक होंगे? सो 1, 1 इज द लीस्ट, सो इट विल बी 2 एंड 2 से ग्रेटेस्ट क्या होगा? 6 + 6, that is 12. So that is target space T. So basically a random variable is a x which is mapping from omega to target space T, right? So now a specific thing, like हमको target space के अंदर कुछ एक subset को ही निकालना है. Like I want 6 to be the sum of the two numbers when we roll a two dice. So what we are saying, we are speaking about a specific outcome inside T. So let's say it is S. S is a subset of T, right? Let me draw it. That is imperfect. So हम लेंगे omega. This is omega. And mapping होगा ना? So this is mapping. So and then it is T. So subset एक होगा. This is S. S. So S is subset of T, right? तो फिर इसका जो हम probability निकालेंगे, so probability of S, so P of X. Let me write in words only. P of S. तो इसको कैसे
रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, आई मीन इन सेट्स, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो एस क्या हो गया? इट इज अ सबसेट इनसाइड ए टी, राइट? तो इसको हम करेंगे इनवर्स करके। किसको इनवर्स करना है? दैट पॉसिबल एक्स। सो हियर वी आर डिफाइनिंग एक्स, राइट? तो इस एक्स को इनवर्स लगा के, लाइक पूरा जो फंक्शन है उसको इनवर्स करके इसके अंदर एस को पास करेंगे, देन विल गेट अ वैल्यू दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। सो वी कैन से इट कैन बी हियर, व्हाट वी डू इज एक्स का इनवर्स लेंगे, एक्स का इनवर्स, एंड उसके अंदर पास करेंगे एस को, so that will be the probability. So once again, if I write here, x is nothing but it's a mapping from omega to a target space, and यहाँ पे x is nothing but omega, a function which mapping is domain is omega उसका, and उसका range है target space, and x inverse क्या होगा? It is nothing but another subset inside omega, like omega के अंदर ही होगा वो चीज. So let's say yeah, let's say some w, let's represent something inside, omega is w that belongs to omega. So x of that specific omega, sorry, that w will be belonging in s inside the target space. So here you need to take a gap and you need to understand. So here जब इसका probability चाहिए, then we'll take the probability of this function. So इसका जो function, ये जो function है, like ये जो function है उसको हम पास करना है किसके अंदर? We need to find the probability of that thing. So this is a integral part of omega. So it is not a value here. So it is the subspace inside omega. So it is a subset of omega, and S is a subset of T. So जब हम probability of S, like we want probability of S, then we need to take inverse of S, and you need to find that specific space in probability space, that specific sample space, and उसके अंदर जो part है उस part का probability हमको निकालना है. So if I once again I'll repeat here. So omega is the total possible outcomes वाला set है, and target space is for a given event with a condition like मुझे sum चाहिए 6. So अगर 6 चाहिए तो क्या क्या possible outcomes होंगे, उसका जो set है that is T, right? Then T के अंदर कुछ एक subset लेंगे. Let's say 3, 3 is one specific subset of overall set here. And उसका अगर हमारे पास probability चाहिए, तो वो वाला probability लेके आने के लिए we need to pass that specific subset in the inverse of x function, and that x वो जो subspace आएगा omega के अंदर, I mean when I say subspace, it is subset. So subset of that specific omega का अगर हम probability निकालेंगे, then it will be probability of S. So probability of S, how we define? We define it as probability of how we define probability of x inverse of S. तो यहाँ पे it will be just probability of the above function which we write. Probability of which belongs to omega.
z x of that specific omega, omega बोल रहा हूँ w, belongs to s. Right. So अभी तक क्लियर होना चाहिए. सो दिस इज द रैंडम वेरिएबल. यहाँ पे एक बार अगर हम फिर से रिवाइज करेंगे, रैंडम वेरिएबल x is just a function mapping from specific domain, that is omega, to a specific range, that is t, target space. So omega क्या होगा, target space क्या है, हम already बोल, like we need to understand what is omega and what is target space. We already did that. And omega से जब mapping होगा to specific t, that is x here, that is x, that is random variable. So yeah, and inside certain, inside t, which is a target space, we took a subspace of that target space. अगर इसका probability find out करना है, then we need to pass it through the inverse of that x, and then we need to calculate the probability of that specific part of omega. Then we'll get the probability of that specific thing. Wait. So this is the basic fundamental understanding of random variable. And random variable, यहाँ पे हम only x, like एक mapping किए थे, which is omega to one mapping based on one condition, that is sum of numbers, right? So ऐसे ही हम अगर 2-3 conditions लेंगे, then it will be like multiple random variables. We can say multivariate probabilistic distribution. So यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, the graph will be so the graph will be so यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे x, and यहाँ पे p of x. So this is not capital P, this is small p of x. So this is what I said, p, or I'll say f of x. F of x is nothing but cumulative distribution function, right? So this you need to understand. यहाँ पे ये है, that is specific event, and यहाँ पे b हो गया, it's another b. So these are discrete यहाँ पे. So at specific point of x, एक given value के लिए f of x क्या होगा, that will be discrete. यहाँ पे हम एक ही चीज, एक specific point के लिए बात कर रहे हैं. So it is not continuous here. So we are speaking about one specific thing, right? So this is discrete in nature. But like these are finite things which can be countable, right? So कितने functions है, यहाँ पे a का function है, यहाँ पे एक a point है, यहाँ पे b point है. So these are finite to count. We can count on hands. But infinite भी होंगे, जैसे मैं example दिया था, choosing a point from the circumference of a circle. So that can be infinite. And another specific thing which we can say is countably infinite. Like count भी कर सकते हैं, but it is very big number which is tending towards infinity. So for a specific for a task to be specific and discrete, countable, so it should be having certain number. Like दो डाइस को रोल किया है तो फिर हमको हमारे पास 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे. So basically 2 power x का फॉर्मूला, 2 power x का फॉर्मूला, so it will give you 4 because x equals to 2. But यहाँ पे जो x है, अगर वो बहुत बड़ा है, right?
So it will tend towards 0, right? So if x is large, then the possible outcomes will be omega will be tending towards infinite, right? By like one second. Yeah. So this is countably infinite. So this condition is called. So this is infinite. यहाँ पे ये this is finite. So अगर हम एक इमेज देंगे मॉडल को एंड हम एक मॉडल को इमेज देंगे एंड हमको ये बताना है कि ये a particular image is cat or dog or giraffe something, right? So here we have possible outcomes as 3 specific things. So that is finite. But अगर हम एक specific graph लेंगे, that is this. So एक इमेज देंगे हम मॉडल को एंड मॉडल को बताएंगे कि क्या होना चाहिए वो चीज. So if there are possible outcomes and which are countable, then it is finite. अगर हम वही चीज एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसका. So यहाँ पे फिर से मैं बोलूंगा x है एंड यहाँ पे f of x है which is cumulative distribution function. So उसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं CMF, CDF, cumulative distribution function. That is f of x, generally small f. तो अगर वो वाला जो पार्ट है, if it is function, so it can be like this, something like that, right? And यहाँ पे हम discrete अभी बात नहीं करेंगे, हम करेंगे continuous वाला thing. So यहाँ पे जैसे कि 3 possible है like this, यहाँ पे A है and यहाँ पे B है, right? This is A and this is B in this graph. So these are possible things which we can count. But हम यहाँ पे एक range देंगे. So this is A. And this is B. So हम ये वाला range को target कर रहे हैं. I mean ये वाला domain को target कर रहे हैं. And you could say like यहाँ पे ये है, so ये का जो f of x लेंगे तो probability मिल जाएगा, b का ये वाला part लेंगे तो probability मिल जाएगा. So it is not exactly probability, as I said. Probability overall it must be between 0, 1. So यहाँ पे ये function क्या represent करता है? You need to figure it out once I explain. So what cumulative distribution function actually represents for a specific interval, right? So यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस में हम क्या करेंगे, इनवर्स लेंगे हम किस चीज का. सो 1 divided by n of 2 of x. So 2 of x is number of possible outcomes and उसका हम अगर इनवर्स लेंगे तो what it will be?
So that will be P of X, let's say. So for specific event और specific x का value यहाँ पे, that will be this thing, right? So here uh, it is not like this. So here we can say x belongs to natural numbers, and so from 1 to some any random number, natural number, right? So this is like P of x is यहाँ पे it is continuous. तो अगर हम ये बोलेंगे कि P of that specific x, that specific random variable, जब उसका आउटकम जो है वो स्मॉल x, लाइक एक स्पेसिफिक पॉइंट a के लिए चाहिए. Let's say this x to be x1, small one single outcome, discrete outcome. And इसका डिफरेंस हम बात करेंगे P of small x के साथ. So both are looking same. Like हम ये बोल रहे हैं कि एक रैंडम वेरिएबल, लाइक एक मैपिंग लेंगे ओमेगा से टारगेट स्पेस तक, एंड जहाँ पे मुझे x इक्वल्स टू x1 मिलेगा उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है. एंड दूसरा वर्ड्स वी आर सेइंग लाइक आई जस्ट वांट दिस स्पेसिफिक x एंड उसका प्रोबेबिलिटी क्या है. सो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी में ये दोनों चीज सेम होता है, एंड कंटिन्यूस थिंग में इट इज डिफरेंट. सो इन कंटिन्यूस x is not a single thing, right? So x is overall a to b. So in continuous thing, x will be mapping from x belongs to a specific range from a comma b, right? So f of x, f of x और small p of x दोनों दोनों सेम है. So this specific thing is यहाँ पे हो जाएगा CDF, that is cumulative distribution frequency. So it should not be, it need not to be between between 0 comma y. I hope you understand this specific part. So ये चीज जो है हम इसको अच्छे से समझने के लिए I'll take an example. अगर हम एक स्पेसिफिक example लेंगे, so if you understand this integration वाला part, you will be getting it easily. So let me write it. So P of a single event, x, a random variable x, जिसका लिमिट्स है x equals to this thing less than x and is in between a comma b. Right, हमको इसका प्रोबेबिलिटी डिफाइन करना है x का. Okay. 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 So यहाँ पे x जो है that is specific random variable which is mapping from omega to t, right? So उसका probability निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? So this is probability function, I mean cumulative distribution function f of x. तो हमको ये से b तक जो है probability निकालना है. So what it can, we can anyone answer this? Anyone? सर्वा भैया, इंचारा दीदी. In this graph,
what is the probability of x which is bounded inside a comma b. So a comma b के अंदर x है. So that is the range for x. And what will be the probability of x? So that is this specific area. So this specific area gives you the probability. And ये जो area है, it is always magically 1 when you take probability. So yeah. So this is always 1 when f of x is cumulative distribution function. So this is always 1. So यहाँ पे I'll give you that this इसका reason क्या होगा मैं बताऊंगा. Why it is always need not to be between 0, 1, right? तो उसके लिए मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा. So मैं 2 एग्जांपल्स लूंगा. भैया what do you mean by MDF? Yes, mass density. Yes, absolutely. So when you consider certain variables, alpha or beta or x comma y, that is mass density function. So when you take linear numerical line and you want to say that, you say it in terms of CDF. But yeah, mass density is more relevant and mostly used like this, I think. So yeah, यहाँ पे हम 1, 2, 3 and 4 है. And यहाँ पे can someone say what is equally likely event in probability? What is equally likely? Yeah, like if you toss a coin, so getting head is equals to getting tail. So दोनों का probability जो है 0.5 होगा. Or if you roll a specific dice and it has 6 faces, and getting each face has an equal probability, which is 1/6. So that is equally likely. And these equally likely events are independent events. So इसका like एक बैग के अंदर एक बॉल को ड्रॉ करना है. So it is independent of any other thing, right? Like मैं ये बोलता हूँ कि अगर मल्टी चॉइस क्वेश्चन है जिसका 4 ऑप्शन है, राइट? तो फिर एक ऑप्शन राइट होने का चांसेस क्या होगा? 1/4 होगा. एंड वो गलती भी हो सकता है. लाइक इफ यू टेक 20 क्वेश्चंस एंड यू से लाइक एवरी क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस एंड सबके अंदर रैंडम गेस करके यू हैव टिक्ड एवरीथिंग. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर? कैन एनीवन टेल दिस? Anyone? Are you understanding the question? क्वेश्चन ये है कि अगर 20 सवाल है एंड एक सवाल का you have 4 options एंड 4 ऑप्शन में एक ही सही सवाल, लाइक एक ही सही जवाब है, तो फिर you have attempted all 20 questions by guess.
So what is the rate of correctness? Like what is the probability of correctness? Take one minute to understand the question and answer it. एक क्वेश्चन रिपीट करना क्वेश्चन. So I'm saying like 20 questions है, ठीक है, and each question is a multiple choice question, right? अगर चारों ऑप्शन है एंड एक ही करेक्ट आंसर है चारों ऑप्शन में, एंड यू हैव 20 क्वेश्चंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बीइंग करेक्ट? लाइक कितना परसेंटेज आप करेक्ट हो सकते हो? व्हाट इज द गारंटी ऑफ इट मैथमेटिकली? नो, इट कैन नॉट बी 5. Can't be 5 कैसे? अच्छा like 5 कह रहे हो? 5 probability कैसे हो सकती है यार? नहीं 5 नहीं बोल रहा हूँ, 5 पीयूष बोल रहा था. अच्छा, इट इज ओके. सेकेंड पार्ट मुझे बताओ फिर से कि लाइक 4 ऑप्शंस ठीक है, आफ्टर दैट क्या बोला? लाइक मैक्सिमम चांसेस या मैं बोला हूँ कि या ही मेंट 5% भैया. लाइक माय क्वेश्चन इज, फिर से एक बार बोल देता हूँ, लाइक 20 क्वेश्चंस है एंड ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस एंड आउट ऑफ विच वन इज द सिंगल आंसर करेक्ट, विच इज करेक्ट. सो ओवरऑल 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद आपके पास कितना परसेंटेज होगा, श्योरिटी होगा कि आप सही किया है, लाइक एटलीस्ट वन क्वेश्चन और समथिंग. ओवरऑल मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि आप एटलीस्ट वन आंसर को लाइक करेक्ट, वन क्वेश्चन को सही आंसर किया है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? So probability of one question being correct, out of 20. I mean 1/4 to the power 20, right? 1 to what did you say भैया? 1/4 to the power 20. कैसे? I mean 20 questions है, right? And I feel like we could do two things कि एक बार कि अगर सारे गलत हो सकते हैं तो we are selecting 3 options. Like 3 ऑप्शन है 3/4, like गलत होने के क्वेश्चन के चांस 3/4. So you are saying it's 20, right? By power 20. 1/4 to the power 20, yeah. I'm saying it should be, if your analogy is correct, then it should be 1/4 into 20, right? So why power 20? अगर 1/4 into 20 करेंगे तो probability 1 से ज्यादा नहीं आ जाएगी. Like how could be probability greater than 1? अरे he is asking the percentage. You are saying the probability of getting corrected after all 20 events. वो परसेंटेज पूछ रहा है कि तुम कितना करेक्ट हो सकते हो. मतलब ये मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी को ऐड क्यों नहीं किया? Why did you multiply it? So 1/4 plus 1/4 plus 1/4. Okay, that way. अच्छा, actually it doesn't works that way, right? Probability like independent event है दोनों. Yeah, that's what I want to get. I want to hear. So every single attempt is an independent attempt. So there is no relation between the first question and second question, right? So अगर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे तो फिर उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? एक 3 डिजिट नंबर को गेस करने के लिए, अरेंज करने के लिए we multiply it. For each value we give an probability and we multiply it. But यहाँ पे there is no relation between first question and second question. Right? Both are independent things. So यहाँ पे कुछ हम श्योरिटी नहीं दे सकते हैं. So when things are independent, you should need to think like that. Like कुछ लोग जब एग्जाम देते हैं बोलते हैं कि 30 क्वेश्चन है तो ऑटोमेटिकली 1/4 करेक्ट ही होगा बोल के. So that is entirely wrong. So इंडिविजुअल इवेंट्स है एंड इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, तो फिर यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, so you cannot draw any conclusions, right? And yeah, let's come back to this specific thing. So यहाँ पे हम वो mostly like
इवन लाइकली अगर हम बात करेंगे, अगर 1 होने का, 2 होने का, 3 होने का, 4 होने का चांसेस इक्वल है, सो इट इज लाइक दिस। लेट्स से दिस स्पेसिफिक पार्ट, यहाँ से यहाँ तक ही हम बात कर रहे हैं, ये वाला डोमेन 1 to 3 ही बात कर रहे हैं in this whole thing. So 1, 2, 3 and ये वाला एक फंक्शन है। So यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल क्यों ड्रॉ किया, कैन एनीवन से? सो यहाँ पे 1 होने के चांसेस, 2 होने के चांसेस, 3 होने के चांसेस इक्वल है। सो ये जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन रहेगा। सो यहाँ पे DMF जो भी डेंसिटी मास फंक्शन जो है, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन एंड इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज इवनली लाइकली है। सो यहाँ पे जो एरिया है, इट शुड गिव यू द प्रोबेबिलिटी, राइट? सो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एरिया हो जाना चाहिए। सो हाउ मेनी यूनिट्स, दीज आर 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स इनटू यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि दिस इज 0.5, यहाँ पे 1 है, राइट? 2 times 0.5, that should be giving you 1, राइट? अब हम ये करेंगे कि ये जो A, B है, ये जो डोमेन है, हम उसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। We will take very small, small sub part of target space. So again 1 हो गया एंड यहाँ पे 2 हो गया एंड यहाँ पे 3 हो गया। तो हम यहाँ पे ये वाला पार्ट ही देखेंगे। सो अप टू 3 तक हम ले आए थे दूसरा, in first example here we will take 1.5 वाला example. I'm not able to track it. Sorry. This is 1.5. सो हम ये सेम एरिया से काम कर रहे हैं। सो यू आर जस्ट कंप्रेसिंग दिस एरिया। सो ये वाला डोमेन, लाइक ये वाला जो डोमेन है उसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो फिर हम जब ये कंप्रेस करेंगे, then it will be some vertical rectangle, right? Visualize that. And it will be certain value, right? So ये इसका width हो गया 0.5, right? इसका width हो गया 0.5 एंड इसका लेंथ कितना होगा? Can anyone say? I mean इसका हाइट कितना होगा अगर ये एरिया इज कांस्टेंट? So it will be 2, that is equals to 1. So area must be 1, as I said, because it's a probability, overall probability, right? तो ये वाला जो पार्ट है, this is 2. 1 second. This is 2. तो अभी मुझे ये सवाल है कि this is A, as I said, this is A and this is B. This is A. Let me write it using this. This is this is A and this specific part is B, and यहाँ पे this is A and this specific outer boundary is B.
तो फिर यहाँ पे A का जो probability, let's say in that density mass function is 0.5 and B का value है density mass function का, that is 0.5 equal, and यहाँ पे दोनों का आ रहा है 2, so it can be probability that is 2. No, so it is not probability here, so this function is not a probability function, ये वाला. So yeah, this is the function, constant function. Constant function. This is f of x. And this is also f of x. GG, if you can, I think थोड़ा जल्दी तुम wrap up कर सकते हो because it's gonna be 12 soon. Okay भैया, एक ही क्वेश्चन है. Yeah. Cool. एक ही कॉन्सेप्ट हो गया है. तो फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि हम यहाँ पे एक लीनियर थिंग डिफाइन किया है, लाइक ए लीनियर, लाइक ए सिंगल रेंज A to B, राइट? एंड A to B का ये जो है, वी स्पोक अबाउट वन रैंडम वेरिएबल. आई थिंक दीदी कुछ बात किया था, क्वेश्चन पूछा था. Yeah, she was asking कि अगर वो random variable है, function है, तो उसको variable क्यों बुलाते हैं हम लोग? हाँ. So yeah, like random variable, and it is function, as I said, it is just a function which has values between A and B. So A and B का बीच में ये random variable है, and it is a function which has. So we need to understand, like यहाँ पे probability जो है 1, 2, 3 होने का, like it is equal 0.5. So it is equally likely. So अगर एक LLM के पास for a given specific question, it has 3 specific answers which are equally likely, like तीनों का probability है 0.5, 0.5, 0.5. So फिर LLM क्या बोल सकते हैं? What it should do? So we speak about uncertainty about things. So probability is mainly about uncertainty. So अभी तीनों के तीन अगर equally likely है तो उसका पास certainty नहीं होगा. So it is top uncertainty वाला case हो गया. So random variable is a function which maps from omega to given target space or R, let's say, by giving like it gives a probability. So अगर हम each outcome को एक नंबर दे देते हैं and उस नंबर को बोलते हैं कि R, so एक रियल नंबर के अंदर ही आएगा. So that is random variable. And अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं and एक like how to visualize this, एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ कि क्या एक कॉइन को टॉस करते हैं and we don't know whether it is head or tail, right? So this specific event which we can call acts like a variable. So we don't know what's the value of whether it is head or tail, right? So एक sample space क्या होगा? head होगा, tails होगा, heads होगा, tails होगा. And अगर head आ गया तो random variable like उसका जो value है वो 1 हो जाएगा, and tails आ गया तो फिर उसका 0 हो जाएगा. So specifically यहाँ पे हम x को एक ऐसे function बता रहे हैं which is mapping from omega and to specific value 1 or 0. But before tossing that specific coin, you don't know what is the value 1 or 0. So it behaves like a variable, right? In that variable, it can be either totally correct, that is 1, or totally wrong, that is 0. So अगर हम LLM को बोलेंगे कि
एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को 3 पॉसिबल आउटकम्स है एंड विच आर इक्वली लाइकली ईच हैज स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी एंड सेम, तो उसके पास अनसर्टेनिटी आ जाएगा एंड इट शुड फाइंड ए वे टू फिल दैट स्पेसिफिक वैल्यू. सो वो वैल्यू चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन मॉडल्स इंटेलिजेंस एंड दोस पैरामीटर्स व्हिच इट हैज. So that's why it is a variable there. So you don't see what is the value assigned to that specific outcome, and you only see the output value. Like यहाँ पे हम heads देखते हैं या फिर tail देखते हैं, लेकिन heads का related जो value है and tails का related जो value है वो हम नहीं देखते हैं. So like हम ये बोलना चाह रहे हैं कि LLM can wants to quantify those specific outcomes. एंड जो LLM के पास रैंडमनेस होगा उसकी वजह से वो डिसाइड नहीं कर पाता है एंड इट इज अनसर्टेनिटी. सो बिकॉज ऑफ दैट अनसर्टेनिटी इट कैन नॉट फिल दैट स्पेसिफिक वैल्यू. सो वो वाला जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन नहीं कर पाता है. तो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरिएबल. आई होप दिस मेक्स सेंस. सो रैंडमनेस इज इनपुट. लाइक हम यहाँ पे इनपुट पे क्या कर रहे हैं, बस हम जैसे एक टॉस कर रहे हैं. सो देयर इज नो स्पेसिफिक थिंग विच इज डिटर्मिनिस्टिक, बट फंक्शन इज deterministic. For a specific input you will get a specific output. It's a machine, right? It's a machine, it's a model where you give a specific input, you will get a specific output. But LLMs के साथ या फिर कुछ functions जो इन्वर्सिबल नहीं है, जो जिसको हम उल्टा करके बात नहीं कर सकते. तो वी कैन नॉट से फॉर दिस स्पेसिफिक आउटकम व्हाट इज द इनपुट. सो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर टेल आ रहा है तो इसका इनपुट क्या होगा, तो ये नहीं बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इनवर्स काम नहीं करता है, क्योंकि देयर इज नो डेटा, लाइक देयर इज नो इनपुट हियर. सो दैट्स व्हाई इट इज अनसर्टेन अबाउट with what value you know define that function. So that's why it is called variable. Yeah, we'll go to Bayes theorem. I was thinking of explaining that only. हम अपकमिंग जो सेशंस है इट विल लीड टू बेस थ्योरम, एंड बेस थ्योरम हम ऐसे पढ़ेंगे कि like you will understand overall machine learning and Gen AI, agentic AI and everything. So you will understand how basic machine learning algorithms are deterministic, and अगर mathematical functions काम नहीं आ रहा है रियल वर्ल्ड में किसी किसी सिनेरियो को डिफाइन करने के लिए, देन उसका पॉसिबल वैल्यूज जो है वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं होगा, एक सर्टेन वैल्यूज होंगे. सो उसके लिए हम बेस थ्योरम पढ़ेंगे कि हाउ इट विल बी हेल्पफुल. सो या एवरी डे मे बी लाइक अल्टरनेट्स डे में विल बी अरेंजिंग दिस सेशंस एंड विल बी डिस्कसिंग इट. एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि जब आपको एक डाउट आ रहा है या फिर जब मैं ये एक चीज बता रहा हूँ, you take another subset, subtopics of those things. You analyze with different ideas. Don't stick with the same example which I have given. And जब आप ऐसे divide करके देखेंगे कुछ examples, then you will be getting a lot of questions. And when you get certain questions, try to figure out the answer. And if you're not figuring out, यहाँ आके senior से पूछना है. And if there's something saying different and आपका analogy different है, then you should debate with them. Then you can understand actually what is happening. So यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था, A to B is a specific linear एक dimension का range ले लिया है, and this is alpha, like x we say specific function x, and like alpha will say एक event है, and दूसरा हम लेंगे बीटा. So अगर हम ऐसे बोलेंगे then it will be टू डायमेंशनल, राइट? इट विल बी थ्री डायमेंशनल ऑलरेडी. यहाँ पे एक फंक्शन है एंड यहाँ पे एक इवेंट है, एंड हम यहाँ पे साइमल्टेनियसली दो इवेंट्स के बारे में बोल रहे हैं, देन इट विल बी टू डायमेंशनल स्पेस. तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा एंड यहाँ पे बीटा हो जाएगा, एंड फंक्शन तो यहाँ पे होगा. सो दिस फंक्शन विल बी समवेयर लाइक दिस, और ये थ्री डायमेंशनल ग्राफ है. सो लाइक दिस इट विल बी अ फंक्शन. So you should understand a canvas. You should imagine a canvas which is bulged at a specific part.
ओके, तो फिर जब हम यहाँ पे एक रेंज ले रहे हैं तो यहाँ पे भी हम एक रेंज लेंगे. सो लेट्स से फ्रॉम 0 से कुछ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ये. सो दिस इज बी एंड दिस इज ए. दिस स्पेसिफिक पार्ट is GG, या sorry for interrupting. I think you can end now. It's 12. People need to go to sleep as well. और वैसे भी I think first years को इतना ज़्यादा एक बार बताओगे, they'll get, overwhelmed with it. So session wise sessions को break करके बताओगे, it's rather better, right? So I think you can end now. Okay. So yeah, like if you have any questions till what I have explained and ये चीज रियली कहाँ यूज हो रहा है ML में, you can ask these questions anyone. First years, second years. Sarva bhaiya, you want to add anything here? नहीं यार, डेफिनेटली लाइक आई वुड से कि जो बताया इसने फर्स्ट ईयर वाला, लाइक लिसन टू हिम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हर चीज में, लाइक प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन मैंने पहले भी बात की होगी जीजी तुमसे, उस चीज में भी सेम, लाइक ईच इवेंट इज बीइंग कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट, और उसके बाद जो वी आर डिराइविंग इज लाइक फॉर्मूलाज, वो एग्जैक्टली सेम है जो हम दूसरे तरीके से लाइक ग्रेडियंट से, ग्रेडियंट डिसेंट, एसजीडी, इन सब से डिराइव फॉर्मूलाज है, उसके सेम आता है, लाइक एग्जैक्ट आता है. सो आई वुड से कि भाई अगर प्रोबेबिलिटी जैसी चीज, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, ओडी हो गया, ये सब मिस मत करो सारे, ठीक है. लाइक डू अटेंड और रेगुलर रहो, जो भी अभी है यहाँ पे, और अपने बाकी मेंबर्स को भी बता दो, फर्स्ट ईयर वालों को. कंटिन्यू जी. I mean, अगर किसी भी फील्ड में अंदर डेप्थ में जाओगे ना, सब में मैथ आ ही जाता है कहीं ना कहीं. फॉर एग्जांपल, इफ यू गो इनटू द डेप्थ ऑफ कंपाइलर्स, आशुतोष ब्रह्मन शेयर्ड अ बुक स्क्रीनशॉट, उसमें इंटीग्रल्स यूज हो रहे थे. सो any field you are in, it's very important to go into the depth of it, and especially with math. If you go into the depth of it, even if you're not good, it's not necessary to be good. You'll be really, really good at problem solving. इसीलिए आज भी सौम्य भैया, he still solves hard problems. You can see screenshots on pseudo randoms and all. ठीक है. I mean, it's not a necessity to be good at it. You can still work and you can understand things. It's just going to take you more time. That's the only trade-off. But it's a good thing to do math at this stage. Okay. तो सर्व अटेंड किया करो. Right, and like also I'll also be taking sessions on OD and group theory आगे, क्योंकि like multivariable calculus हो गया या फिर probability हो गया, these are like topics बहुत ज़्यादा important है, and not only in ML, ये सब में काम आते हैं. Like optimizations करोगे तो उसमें भी like तुम चीजें change करोगे तो you rely on these mathematical terms, तब जाके तुम optimize करोगे. तो definitely do attend भाई, मत miss करो, and well, good affairs भाई, GG. Yeah. So basically, whatever science we are learning, so everything is defined by mathematics. So mathematics is the language you understand whatever around you. So aerodynamics में, automobile में, computer science में, जो भी है, like AI is nothing but we are using mathematics to create intelligence. So nature is defined by mathematics, like rainbow हो गया, gravitational pull हो गया, सब कुछ mathematics के अंदर आएगा. So definitely when we try to create certain intelligence, we use mathematics. So mathematics is the language to understand universe. So मैं ये भी ऐड करना चाह रहा था आज के सेशन में कि like hallucinations कैसे होते हैं and what is the probability behind the hallucinations and why LLMs choose to hallucinate rather than saying I don't know. So Q was it gives wrong answer. So it is not giving wrong answer. So we will discuss about this phenomena, why LLMs hallucinate and what is the probability factor which is affecting, and रिवॉर्ड्स कैसे मिलेंगे लाइक LLMs को करेक्ट आंसर देने में, रॉन्ग आंसर देने में. सो दैट विल बी इन टुमारो सेशन एंड आई हैव मेड ए शीट. So this sheet is especially for people who are really serious about ML and understanding very basic concepts to experimenting using code. So ये सब चीज कोडिंग में भी it will be helpful when you write a function or something. So that sheet is for that specific people and it will be tracked by seniors. Like आप लोग कितना sessions attend कर रहे हो and if you are solving something which has given here, and this is like I'm not only the one who starts teaching here. So सर्वा भैया भी आएगा, so उनका भी sessions वहाँ पे ही update होते रहेंगे and आपका attendance वगैरह mark होगा and आपका जो track your progress, everything will be tracked there. So whoever is very much interested in ML, so how things are
working in ML and everything, they should be, texting me or Inchara Didi or Shubhang Bhaiya. Then they will add your name in that sheet. एंड दे शुड बी कंसिस्टेंट. ऐसे नहीं कि पहला सेशन अटेंड किया एंड उसके बाद हम चले गया क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं है. ऐसे नहीं होना चाहिए. तो दैट्स द रिक्वेस्ट. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग ML, then you please approach them and get yourself registered, and you can just comment them there in the sheet and they will update your attendance and all this stuff. That's all for today, and बात करेंगे कल सेशन होगा कि नहीं, and उसके बारे में we'll continue about the functions, cumulative like density mass function, cumulative distribution functions, and there are 3 other type of functions. We'll discuss all about them, and we'll understand how LLMs hallucinate and what is the probability factor behind them. Okay, then we will conclude today, and if you have any questions, I'll be staying here for a while, whereas like remaining members can leave.